buyback of equity shares. Last time we stopped with some practical questions. Today we're gonna proceed with that. I told you the next time when I'm gonna see you, I will be doing something new. So welcome to the new concept. Till now, we did the journal entries and we were being given how many shares you want to buy back. But from now, you have to calculate the number of shares that you need to buy back. Sahi hai? And for that, I'll tell you one formula. That formula was the nominal value of the share that you need to buy back will be equal to the proceed of the fresh issue plus the divisible profit that you're going to transfer it to what? CRR. Right? So now, from this question, we'll assume there is no fresh issue. Fresh issue nahi rahega. The company wants to buy back and we have to tell them कि how many shares you can buy back. आप कितना बाय बैक कर सकते हो, that amount. यहाँ पे तो हम लोग उसको मान ही नहीं रहे कुछ. If there will be any, तो we would take care of it. DP, CRR, मतलब आपके पास में कितना रिजर्व्स पड़ा है जिसके ऊपर आप बाय बैक कर सकते हो. Because that reserve has to be transferred to CRR ना. DP मतलब divisible profits. जो आप ट्रांसफर करो किसको? CRR. अच्छा, ये डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है ना उसका एक लिस्ट है एंड फ्रॉम द लास्ट फ्यू पेपर्स ना देयर आई हैव जस्ट पिक्ड आउट अ कपल ऑफ रिजर्व्स विच कम्स इन द एग्जामिनेशन कि दिस इज अ डिविजिबल प्रॉफिट, दिस इज नॉट अ डिविजिबल प्रॉफिट. सो आई हैव सेग्रीगेटेड दैट. नाउ हैव अ लुक. द वेरी फर्स्ट वन, अच्छा आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्री रिजर्व्स फर्स्ट. Means in the question if these are appearing, it's a free reserve. First one is of course P&L account, profit and loss account, general reserve account, sorry not general reserve account, general reserve. The next one dividend equalization reserve. Means these are the free reserve that you can use it. Getting it? For any funds you are like making any preparing any funds. Like for example, if you are taking workman compensation fund, then any funds and all. So that will be coming in your free reserves. Next is investment fluctuation reserve. I talked to you about this when I was doing last time your FM. मैंने आपको FM पढ़ाया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंट्स लास्ट टाइम. उसमें आपको मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है व्हेन आई वाज डूइंग कैश फ्लो. इस बार आपको मैं अकाउंट्स भी पढ़ा रहा हूँ, बट आई टोल्ड यू इन दैट. नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर रिजर्व्स विच आर नॉट फ्री रिजर्व्स. मतलब दिस रिजर्व्स यू कैन नॉट यूज इट बिकॉज दिस हैव बीन मेड फॉर अ स्पेसिफिक रीजन. यू आर कीपिंग इट असाइड फॉर अ स्पेसिफिक रीजन. I'll not write that, I'll just read it out to you. First is revaluation reserve. Revaluation reserve क्या होता है? कोई भी assets को revalue करना. Like we are doing any partnership for, आपने किया होगा partnership firm accounts में TYBCOM और FYBCOM में कि whenever you are getting any partner in the business, you revalue the assets. amalgamation करना है. अच्छा कोई पार्टनर बाहर जा रहा है, revaluation reserve, revaluation करना पड़ता है ना अपने को, that reserve. So this is not an free reserve. Then capital redemption reserve. Of course this is not a free reserve. CRR वो specific reason के लिए बनता है. Capital redemption reserve ये. अच्छा, I'm not talking about this current CRR. I'm talking about the old CRR which you might have kept aside for some other reason. I'm talking about that. Debenture redemption reserve same as capital redemption reserve for the shares. Debenture redemption reserve for debentures. Share forfeiture. Share forfeited. कोई बंदे ने पैसा नहीं दिया, अपन उसका शेयर फोरफिट कर लिया, शेयर फोरफिचर. देन कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, राइट. वो भी हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं. सबसे पहले चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था शायद, याद है कि नहीं है. देन यू हैव स्टैट्यूटरी रिजर्व, टैक्स रिजर्व्स. ऑफ कोर्स स्टैट्यूटरी लीगल रिजर्व्स. तो लीगल रिजर्व आप इसके काम में यूज़ नहीं कर सकते भाई. टैक्स रिजर्व्स, गवर्नमेंट आएगा तुम्हारे घर पे. अभी तो मोदी आ भी गया है ना,